In a region ruled by a puppet government and a corrupt bureaucracy, life has always been a struggle for the two-thirds of the population that lives below the poverty line. But the soaring food prices is driving the people of Pakistan-occupied Kashmir to further despair, pushing many to take their own lives. इस वक्त आवाम में इतनी बेचैनी पाई जा रही है कि जिस तरह के रोज मीडिया में भी दिखाते हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो शायद अगर हालात इसी तरह के रहे और फंड्स न जारी किए गए आजाद कश्मीर को, तो यहां भी ये सूरत हो जाएगी कि लोग खुदकुशियों पे उतर आएंगे। According to data compiled by the Pakistan Human Rights Commission, about 1,393 people committed suicide across the country in 2009, primarily due to financial reasons. A good number of these cases were registered in Pakistan-occupied Kashmir's capital, Muzaffarabad. This despite government claims that poverty has decreased by over 10% in the last few years. What is even more deplorable is Islamabad's irresponsibility in disbursing financial help to the impoverished region. The Zardari government, in its budgetary provisions, recently imposed a 40% cut in the budget of Pakistan-occupied Kashmir. ये जो बजट पेश किया गया है जी, तो ये इस टाइप का बजट है कि इसे गौरवतंदाई कहा जा सकता है। यहाँ बुनियादी बात जो है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के कोई अपने रिसोर्सेज नहीं है इनकम के, तो आज़ाद कश्मीर का बजट जो है वो डिपेंड करता है पाकिस्तान पे, कश्मीर काउंसिल पे। तो इस बजट में जबकि हमारी हुकूमत के जनाब वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया कि वफाक ने हमारे फंड्स रोक लिए हुए हैं। After the division of Kashmir following the first India-Pakistan war in 1948, Muzaffarabad has largely been turned into a colony ruled by brute force. While it has plundered the region of its rich resources, it has done little in the name of development that subsequently led to rising unemployment and poverty. मुजफ्फराबाद के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट भी उसका आगाज ही नहीं हो सका। मास्टर प्लान पे अमल दरामद तो दूर की बात, यहाँ की सूरत तो यह है कि हमारी जो जीटी रोड्स हैं वो खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। आप चेले में चले जाएं तो इस तरह महसूस होता है कि किसी सहरा में आ गए हैं। The financial problems that drove many to desperation are likely to get worse as the flood that has devastated the region has wreaked havoc on its infrastructure and the vital agriculture sector. For the people of the region, the floods are a double whammy. Most were picking the strands of their broken lives after the devastating 2005 earthquake, when the raging waters swept away whatever they had managed to rebuild.